सावली के समलाया गांव निकट से मिनी नदी गुजरती है, जिसमें केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा होने के आरोप गांव के लोगों की ओर से लगाए जा रहे हैं। तब इस मामले को लेकर गांव के लोग रोष प्रकट कर रहे हैं। मिनी नदी में केमिकल माफिया का आतंक होने के स्थानीयों के आरोप है, क्योंकि नदी में सफेद रंग के झाग की परत दिखाई पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को प्रदूषण की आशंका है। तो वहीं कई स्थल पर नदी का पानी लाल रंग का बन गया है, जिसकी वजह से गाँव के लोग चिंतित है। केमिकल युक्त पानी की वजह से बड़ी तादाद में मछलियों के मौत के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो वहीं इस नदी के पानी से खेतीबाड़ी और पशुधन को नुकसान होगा, ऐसे किसानों में भीति भी है। हालांकि जीपीसीबी के सामने कई बार गांव के लोगों की ओर से मौखिक पेशकश की गई है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे आरोप भी गाँव के लोगों की ओर से लगाए जा रहे हैं। तब जिम्मेदार केमिकल माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग ग्रामजनों की ओर से उठाई जा रही है। साथ ही नदी के पानी के सैंपल कलेक्ट कर तत्काल तौर पर जांच करवाने की मांग भी उठाई जा रही है, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर उग्र पैमाने पर आंदोलन करने की धमकी भी गांव के लोगों की ओर से दी गई है। आज रोज અમે આ મિની નદી જે અમારા ગામમાંથી જૂના સમલા ગામથી નીકળે છે ત્યાં સ્થળ તપાસ કરતાં ખબર પડી કે નદીની અંદર પાણીમાં લાલ થયેલું છે અને પાણીની અંદર જીવજંતુઓ પણ મરી ગયેલા છે। માછલી મરેલી દેખાઈ રહી છે। એવી ઘણી બધી માછલીઓ આ વરસાદમાં તણાઈ પણ ગઈ છે આગળ। અમને એવું લાગી રહ્યું છે કે અમારા આજુબાજુ જે કેમિકલ કંપનીઓ આવી રહી છે એ કંપનીઓ દ્વારા પાણી છોડી રહ્યા હોય એવું જાણે શંકા અમારી થઈ રહી છે। અમારી રજૂઆત જીપીસીબીના લાગતા વળગતા અધિકારીઓને મૌખિક ઘણી બધી વાર જણાયેલી છે, પણ એની અત્યાર સુધી કોઈ એવા શિક્ષાત્મક પગલાં લેવામાં નથી આવ્યા। જો શિક્ષાત્મક પગલાં હવે નહીં લેવામાં આવે તો અમે જૂના સમલાયના ગ્રામજનો આગળ ધરતું કરીશું અને આંદોલન કરીશું। બીજું કે આ નદીની અંદર ગામના પશુઓ, ગામના વ્યક્તિઓ અહીંયા અવારનવાર આ પાણીનો ઉપયોગ કરતા હોય છે। આ પાણીનો ઉપયોગ ખેતીમાં પણ થતો હોય છે। તો આ પાણી એટલું પ્રદૂષિત છે કે જીવજંતુઓ મરી ગયા છે। તો અમને એવું લાગે છે કે અમારી જાનને ખતરો છે ગ્રામજનોની। જો આની ઉપર કે કંપનીઓને લાગતા વળગતા કંપનીઓને પકડવામાં નહીં આવે તો એમની औकात જો કંપનીઓને બતાવવામાં નહીં આવે તો અમે ગાંધીજી ચિંધ્યા માર્ગે ગ્રામજનો સૌ ભેગા મળીને उग्र आंदोलन करीશું। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।